नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय बिहार बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम। डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय बिहार बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वागत गीत से सभी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का मुख्य विषय मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव को बतलाया गया। कार्यक्रम में जिला के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने गोईठा बनाना, वाटर टैंक क्लीनर, इको इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, जल संरक्षण, लाइट पॉल्यूशन, नेचुरल फॉर्मिंग, मैथमेटिकल एनालिसिस एवं जलवायु परिवर्तन इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में डैफोडिल स्कूल के निर्देशक रवि सर ने अतिथियों को साल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किए। सम्मानित अतिथियों में सदर आलम के प्राचार्य, बाल कल्याण विद्या कुंज के प्राचार्य के अलावे अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कामना की। We are sponsoring, organizing this on behalf of the Nalanda district. This is the great opportunity for us that we have got this opportunity, and I am very thankful to the district authorities because they have provided us such kind of the opportunity, and we are providing the venue and whatever the instructions of the districts, states and other dignitaries issued to us, we are following that, and we are trying our level best to make this program successful so that in the coming days our small kids, our small students, they have got the innovative idea. They should come to the district platform, state platform, national platform, as well as international platform. This is our basic idea, just to make the program successful. In this way, we are organizing, and this is a great event for the Nalanda district also, because a lot of the schools they have participated, and let it be the government school or private or CBSE affiliated school, they all have attended and participated in this, and they have come with the project and different projects. Basically, so these are related to our हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर है और प्लस ये वर्किंग मॉडल है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो वाटर क्लाउड से गिरता है उसको स्टोर किया है। ये पहले तो बहुत इकोनॉमिकल है, प्लस फीजिबल भी है, आसानी से हो भी सकता है। जो पानी नीचे गिरेगा उसको हम लोग स्टोर करेंगे, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, लाइक हम लोग उसका हाउस होल्ड में यूज़ कर सकते हैं, हम लोग उसका खेती बाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, एंड मेनी अदर यूजेस है उसका। तो दिस इज आवर प्रोजेक्ट सर। दिन CO2 का मात्रा बढ़ते जा रहा है और कुछ गैसेस फैक्ट्री से भी निकलता है और गाड़ी से भी बहुत पोल्यूशन होता है, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेशन हो रहा है, जिसके कारण ओजोन लेयर दिन ब दिन थिनिंग होते जा रहा है। ओजोन लेयर दिन ब दिन थोड़ा पतला होते जा रहा है, जिसके कारण हमारा अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, जिससे कि हम लोग जैसे कि आइस ग्लेशियर पिघल रहा है। आइस ग्लेशियर पिघलने के कारण वो सी से मिलकर फ्लड आ जाता है, जिसके कारण फ्लड से हमारा प्रोडक्शन पूरा ख़राब हो जाता है, जिसके कारण सॉइल फर्टिलिटी पूरा ख़राब हो जाता है। सॉइल फर्टिलिटी के कारण जितना हम लोग को प्रोडक्शन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। Yushi Kumari from class 10. We are the student of Daffodil Public School. I am standing here for explaining this my project. My project name is climate change and its effects on the productivity. It is a small parts of this project. Global warming. Global warming is a very important role in my Earth atmosphere environment. Climate change. Climate change is a very extreme. Climate change is a very extreme. Climate change is a very extreme. This is Priyadarshini Mehta. This is Kiran Kumari from Daffodil Public School. We are presenting a model upon water
conservation for sustainable future. In this model, we are doing a manual sewage system in which we first dug up a hole at the foundation of the city, and then it is purified by the layer of clay which make it waterproof. Then make it with the bricks we create a canal which have pores for seepage of water. Here the water seeps and leftover area filled with gravel and sand. The drainage pipes are also connected with it, which purify the water, and after purification the water also supply to the home, which make this water which make it a unlimited source of water. It is mostly used in 16th centuries at Venice, but taking its last breath at 19th century, when with the rise of high demand of grains, the farmer also started using several kinds of chemical fertilizer, which mixes it with water, making the water deadly and spreads several diseases. We put a treatment plant near the irrigation canal and river, which purify the water and leave it to underground, which it is a money savior project and also save economy. The government must implement it in underdeveloping cities like Bihar Sharif and Amravati, which is underdeveloped. It may also save water, and it is very affordable for any city. Here we arrange pebbles which collect rainwater automatically. This kind of 30 canals can give full supply to a whole city. We after 10 to 15 years, the sand must be changed for the great supply of clean water. The canal maintenance and water department for its maintenance. Thank you. Today hosting District Nalanda Science Exhibition program in Daffodil Public School. Hello, I'm Chandni Pandey. I'm coordinator in this school, and today I host Science Exhibition. So our students are very interested and very exploration of knowledge according to science, and easy of knowledge to according to situation to, and create a movement of global warming and wasted water and water recycling and rain harvesting water. So many topics with easy way to understand to another people. So to understanding, and please follow in them according to unsafe global warming. Thank you. 9A from the school Sevam Residential Public School Nalanda. This is a project about hydroponic and aeroponics model. Generally we know that the crops are grown in soil, but we can also grow it with the help of water and air. This is the main content of this model is that we can grow it with the help of water and air. Now a question arises that how can a crop grow in water? Now we can say that if the nutrients and minerals we mix in the water, then the crops can acquire their minerals and nutrients from water, so they can grow easily. Now in aeroponics model, there is nutrient enriched mist which is mixed in the air. From that the crops acquire their from the air the crops acquire their minerals, so they grow easily. Good morning, sir. This is my project. I am Divya from Standard 80 from Sevam Residential Public School. This is my project of global warming. In this world, we are facing many problems from global warming. Like we take an example of Delhi. In Delhi, we cannot inhale fresh air because of pollution. Due to which many people dying. And due to which many people dying because of cancer. That's a huge problem. So I am requesting you all to maintain the balance of our ecosystem. Thank you. My name is Nali Bharti. I read in class 7th. My school's name is Alpha International School, Noor Shah Nalanda. My project name is water tank cleaning with a special outlet type in the tank.
पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पानी के बिना हम धरती पर नहीं रह सकते हैं। जो हर घर हर क्षेत्र में पानी जरूरी है। पानी टंकी गंदा रहने के कारण हमारे स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं। पानी साफ करने का हमने एक तरीका बनाया है। स्टॉल मिला हुआ है सर प्रोजेक्ट इस खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज़।